So now we need to find out three things from the concept of Bohr. First is radius, velocity, and energy of an electron in the nth orbit. Nth orbit में how do you find out the radius, velocity, and energy of an electron moving in the nth orbit? ठीक है? So we start off first from the Rutherford's concept. The electron move around the nucleus and that moves around in such a way that the centripetal force is provided by the electrostatic force. ठीक है? So the first concept is centripetal force, that is mv square by r. You understand this centripetal force? mv square by r होता है ना? Should be equal to the electrostatic force. Now tell me, if this is the nucleus which has got Z atomic number, then the charge on the nucleus is plus Ze. और जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऑर्बिट में घूम रहा है उसका चार्ज कितना है? माइनस C. So we neglect the nature of the charges, but the charges will be 1 by 4 pi epsilon naught q1 into q2 by r square. हाँ या ना? Right. ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए है. बोर्स थ्योरी एक्चुअली अप्लाइड होता है ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स. ठीक है? फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम mv square by r equal to 1 by 4 pi epsilon naught Ze into E by r square. हाँ या ना? So हाइड्रोजन के लिए लेंगे तो Z का वैल्यू 1 हो जाएगा. Just to keep it variable हम Z का वैल्यू यहाँ रखा है. ठीक है? और कुछ नहीं. Now this is equation 1. So ये देखो Z into E को हम लोग Z स्क्वायर कर सकते हैं ना? Z स्क्वायर रहने देते हैं. और बोर का थ्योरी क्या बता रहा है? सेकंड थ्योरी. बोर का सेकंड थ्योरी क्या बता रहा है? MVR is equal to NH by 2 pi. Right. This is equation 2. ये तो इक्वेशन सॉल्व करके हम लोगों को रेडियस और वेलोसिटी पहले निकालना. जल्दी से शुरू हो जाओ. हाँ जल्दी से निकल जाएगा. निकाल दो जल्दी से. निकाल दो जल्दी से. निकाल दो. रेडियस और वेलोसिटी निकालना है. निकाल. So I'm just substituting back the value of V from this second equation into the first equation, and the value of R will come out to be R और V. रेडियस देखो क्या लिखा है? रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी. सो R क्या आ रहा है यहाँ से? इफ वी पुट द R ऑन दिस साइड, ये एक R स्क्वायर और R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ये R को इधर रखेंगे तो विल हैव h स्क्वायर epsilon naught m into E square into Z. सी और किस बात में की? Right. So this is the radius of the nth orbit. अच्छा पाई क्या आएगा ना? Right. पाई कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में. पाई. एक पाई क्या है? So radius of nth orbit. अब देखो velocity का एक्सप्रेशन निकला हुआ है. R का वैल्यू यहाँ डाल देंगे. We'll get the velocity. Therefore, V is equal to NH by 2 pi m
और ये r का वैल्यू यहाँ डालने से क्या आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट pi m e स्क्वायर z। সো একটা h ক্যান্সেল হবে, একটা n ক্যান্সেল হবে, আর pi pi ও ক্যান্সেল হবে। আচ্ছা m m ও ক্যান্সেল হবে, e স্কয়ার z by 2nh into epsilon naught। Now these are the two expressions। एक छोटा सा चीज इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा आता है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन में বেশি আসে, একটু মন দিয়ে শোনা যেটা বলছি। See, in this expression, for a particular atom, h square epsilon naught pi m e square z, all these are constants. So you can say that the radius of nth orbit is directly proportional to square of the n. Radius of nth orbit is directly proportional to square of n. But when I ask you velocity at the nth orbit, that is proportional to 1 by n. The velocity at the nth orbit is proportional to 1 by n. So MCQ में ऐसा आता है कि they give you that velocity in the fourth orbit is proportional to what? Then you need to keep this in mind that any orbit the radius is proportional to square of n, and any orbit the velocity is inversely proportional to n. What does this mean? As the number of orbit increases, the radius increases square times. Means the first orbit, if it is of this size, so radius this much, then the second orbit will be 4 times of this radius. Means then the third orbit will be 9 times of the initial radius, right? 9 times of the initial radius. And this is the reason why most of the space inside our atom is empty. You understand why? Because nucleus is at a very small portion. Then comes the first radius, then comes the second radius. So these radius are very large distance away from each other. Alright? And as the distance increases, what happens to the velocity? Right? Because it is inversely proportional. देखो, velocity क्या है? Inversely proportional. So the velocity of the electron goes on decreasing. Is this clear? सबका हो गया? जल्दी से ये बना लो quickly. Yeah. Now tell me b का expression क्या मिला तुम लोगों को? ठीक है? अच्छा. Now if you are finding out the energy in the nth orbit, energy of the electron in the nth orbit, that energy has got two expressions: kinetic energy and potential energy. You know potential energy for any charged particle around another charged particle, right? It is 1 by 4 pi epsilon naught z e square by r, right? Z e square by r, yes or no? हाँ या ना? Right. अब velocity जो expression मिला है हम लोगों को और radius का जो expression मिला है, वो अगर हम लोग यहाँ पर डालते हैं, we'll get the energy का expression. But before that, I have a small concept. थोड़ा ध्यान से सुनो. देखो जब हम लोग डिडक्शन कर रहे थे ना, we got velocity in terms of radius. वो क्या आया था? बोल सकते हो मुझे कोई? Velocity in terms of radius क्या? क्या? nh by nh by 2 pi m r, right? अगर हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर डालते हैं, नहीं होगा, छोड़ दो। So we you use this ये वाला एक्सप्रेशन b का ये वाला एक्सप्रेशन यूज करो और रेडियस क्या मिलेगा बताओ? r n square by n square epsilon naught over pi m e by m e square z. अच्छा, now put these values out here and see how much do you get. Put these values over here and see how much do you get. B square is ये तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव क्या हो जाएगा?
कंसंट्रेट यहाँ पर बी का वैल्यू निकालो। राइट तो बड़ा बड़ा है जाएगा अच्छा now look at this when you substitute the values क्या आ रहा है देखो यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन आइडेंटिकल आ रहा है सिर्फ ये देखो इसका आधा आ रहा है राइट कैन यू अंडरस्टैंड दिस ये 8 है और यहाँ पर सो देखो we can say that kinetic energy is equal to half of minus of potential energy right or you can say potential energy equal to minus of twice of kinetic energy ये sort of आया ना अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 8n square a square epsilon naught और इधर क्या आएगा 1 minus 2 आया ना पाई कैंसिल हो गया ना ऊपर एक नीचे एक पाई समझ रहा है अच्छा अब देखो 8n square a square epsilon naught ये एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या होगा 1 minus 2 आएगा ना तो माइनस हो जाएगा सो इट विल माइनस m e square sorry e to the power 4 into z square क्या करते हैं हाँ epsilon naught का स्क्वायर है राइट सो दिस इज द टोटल एनर्जी अब देखो टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का एग्जैक्टली सेम है सिर्फ क्या साइन है नेगेटिव साइन है राइट सो यू कैन आल्सो राइट दिस एज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी potential energy is equal to minus of twice kinetic energy and that is twice of total energy so you can also say total energy equal to minus of kinetic energy अरे शॉर्टकट यही वैल्यूज डालने के बाद 13.6 आ गया अच्छा now look at this you got this energy for hydrogen atom z का वैल्यू कितना होता है z का वैल्यू 1 होता है so therefore En यानी energy in the nth orbit is minus m e to the power 4 by 8 n square a square epsilon naught square हो जाता है right so see n को छोड़ के barring n every other things are constant if you find it out if you put the values you get it to be minus 13.6 by n square but the unit will come in electron volt it comes out to be minus 13.6 by n square electron volt you need to remember this value you have to remember 13.6 by n square ev means first orbit में 13.6 होगा सेकेंड ऑर्बिट में 13.6 by 4 होगा थर्ड ऑर्बिट में 13.6 by 9 होगा एंड सो ऑन इज दैट क्लियर